चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस ते। दक्षिणी अफ्रीका के बार च हुई गोलीबारी, 14 लोगों की मौत ते कई जख्मी। नीदरलैंड च किसानां दा सरकार खिलाफ प्रदर्शन, सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानां ते सख्त कार्रवाई की शुरू। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दा वड्डा कदम, भारत समेत 5 देशों च तैनात यूक्रेनी राजदूत कीते बर्खास्त। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जोहान्सबर्ग के सोवेटो टाउनशिप च एक बार च हुई गोलीबारी च 14 लोगों की मौत हो गई है ते 3 होरां दी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानक पुलिस अधिकारियों वालों जानकारी दी गई कि वह रिपोर्टां की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने दस्सिया कि शनिवार देर रात एक मिनी बस टैक्सी च आदमियों का एक समूह आया ते बार दे कुछ सरपरस्तां ते गोलीबारी की। पुलिस ने एतवार सवेरे लाशां नूं हटाया ते इस गल की जांच शुरू कर दी है कि समूहिक गोलीबारी क्यों हुई। उधर नीदरलैंड च खेती और पशु पालन ते पाबंदी नूं लैके किसान नाराज ने। वह सरकारी इमारतां दे सामने हड़ताल ते बैठे हुए ने। इस अंदोलन लई भारत विच होए किसान अंदोलन की तरह ट्रैक्टरां की वरतों की गई है। किसानां ने नीदरलैंड हाईवे समेत कई मुख सड़कां जाम कर दित्तियां ने। उत्थे ही कई शहरों में सुपरमार्केट भी जाम कीतियां गईयां ने। डच सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानां ते सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत प्रदर्शन कर रहे किसानां चों कईयां नूं गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सूत्रां अनुसार डच सरकार ने अगे वधन ते विघन नूं रोकण लई प्रदर्शन कर रहे किसानां ते कनेडा स्टाइल की कार्रवाई शुरू की है, जिस दौरान किसान जख्मी भी हुए ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत समेत 5 देशों च तैनात यूक्रेन के राजदूतां नूं बर्खास्त कर दिता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अधिकारित वैबसाइट से प्रकाशित बयान मुताबिक इन्हां देशों च जर्मनी, भारत, चेक गणराज, नॉर्वे ते हंगरी शामिल ने। सब तो वड्डी हैरानी जर्मनी विच तैनात यूक्रेन के सीनियर राजदूत आंद्रे मेलनिक की बर्खास्तगी दी है। वह यूक्रेन ते रूस के हमले नूं लैके सब तो वध बोलिया सी। बयान च इन्हां राजदूतां नूं बर्खास्त करन दा कोई कारण नहीं दस्सिया गया है। अजे स्पष्ट नहीं है कि इन्हां डिप्लोमेटां नूं कोई नवी जिम्मेवारी दी जाएगी या नहीं। ब्रैम्पटन च शुरू हुए 3 दिना कैराबरम के पहले दिन पंजाब पैविलियन च खूब रौनकां लगियां। दी लोफर्स लेक के कम्यूनिटी सेंटर च लोगों के भारी इकट्ठ च इस सभ्याचारक इवेंट की शुरुआत हुई। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन तो इलावा कई राजनीतिक हस्तियां ने भी शिरकत की। गिद्धा ते जागो पहले दिन के दिल खिचवे प्रोग्राम हो निबड़े। लोकल संगीतक मंडलियां ने भी खूब रंग बन्निया। भैनों के भरावो, अज मैं बड़ी खुशी होंगी है दसते हुए कि पंजाब पैविलियन जो कि पिछले 5 साल तो चल रहा आ रहा सी, 2 साल कोविड करके बंद हो गया सी, फिर शुरू हो गया है। और ये अपना पंजाब पैविलियन जो है एक बहुत अच्छे वैन्यू के उत्ते लोफर लेक्स के उत्ते इस वे शुरू हो रहा है। मैं सब बेनती करांगा कि हम के आओ और अज का दिन जो है आज 6 बजे तो लाके रात के 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और कल ये प्रोग्राम जो है सैटरडे नूं अपनी मुसलमान की ईद भी है, वो भी सारे आ रहे हैं। तो यह अपना सवेरे 12 बजे तो शुरू होएगा, रात के 11 बजे तक चलेगा। और मैं कल वास्ते थोड़ा सारे अपील करांगा कि दर्शन दियो। और उस तो बाद एतवार नूं भी ये जो प्रोग्राम है ये 12 बजे तो शुरू होएगा, शाम के 7 बजे तक। और सब नूं मैं सीधा पता दे रहा हाँ कि इतने रंगा प्रोग्राम चल रहा है, इतने गिद्धा चल रहा है, इतने जागो चल रही है और इतने अपना भंगड़ा चल रहा है। और इतने बाकी दे संगीत और गीत भी सारे आए हुए हैं और कवि दरबार भी हो रहा है। और मैं सब बेनती करांगा कि आके हम आके इस मोरान को भी बताओ और अपनी पंजाबियत नूं अगे ले आओ। Well, a big hand to Trip Paul on all his efforts to put this together. And I should note Major Nagra, my longtime friend. I didn't realize you were part of the committee, saw your sponsorship there. So many great people involved in putting this together. The beautiful thing about Caribram is an opportunity for us to celebrate our mosaic. Yes. Not everyone knows about each other's background. And one of the beautiful things about Canada, and we live in the greatest country in the world, but one of the things I love about Canada is there's no contradiction in being proud of your ancestry, proud of your heritage, and at the same time proud to be Canadian. No contradiction at all. It actually makes our country even more beautiful. And a festival like this, Caribram,
We get to share the joy, the beauty of each other's cultures with each other. I just came from the Tamil pavilion at St. Max, and I'm going to be going to the pavilions throughout the weekend. And I really think it's extraordinary to live in a city where in a beautiful, harmonious way we celebrate each other. Now, I have in my office here today Kuldeep Goli. He works very hard, proud of his Punjabi ancestry. Give us a wave, Kuldeep. And I've had the chance to visit the Punjab many times. Not once, not twice, but 9 times. And I say, when you visit the Punjab, you fall in love with it. First time I went was 2007. When I came home, I said, when can I go again? So from Amritsar to Chandigarh, to Ludhiana, to the Golden Temple, the culture is so rich. The history is so beautiful. I think it's a gift in the city of Brampton to have such a vibrant, proud, and accomplished Punjabi community. I'd also say that one of the things I love about our city is we celebrate in a very meaningful way, not just the Punjab, but of course the Sikh faith. And I'll give you an example. 2 years ago, we had Guru Nanak's 550th anniversary. Brampton actually got international attention because we renamed a street after Guru Nanak and made a pledge on his birthday year to plant 10,000 trees, because of course Guru Nanak was one of the world's first environmentalists before it was even popular to be an environmentalist. And Paul, I'd add one other thing that I'm proud of what's happening in our city right now. When we talk about this caravan, about it being a mosaic of faiths and cultures, 2 years ago, the province of Quebec passed a bill that said you can't wear a turban. You can't wear a hijab. And that's not too far away. Quebec's not that far away. It's just a 5-hour drive. And the city of Brampton began a campaign to challenge that bill. We started with one city, and 30 cities around the country joined us to fight that bill. And now the court case to fight that bill to the Supreme Court is fully funded. But what makes me proud is we've sent a message around the country that Brampton stands for religious freedom. No one in our country should ever lose their job based on their faith. And in Brampton, we celebrate diversity, we celebrate multiculturalism, and we celebrate religious freedom. And so I just want to say I love our city, I love our Punjabi community, and I want to thank everyone for being involved in hosting this pavilion over the weekend. I know it's a beautiful weekend outside. There's many other places you could be, but on behalf of the city of Brampton, I wanted to thank Paul and his team for putting this pavilion on. May you have a fantastic caravan. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਜਾਗੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨੋ 40th ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਰਾਵਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। volunteers, organizers, I know Changar uncle बड़ी देर तो मैं देख रही हूँ इन्हों की सारी टीम बहुत ही मेहनत नाल थोड़े लिए रंगारंग प्रोग्राम पेश करते हैं। रतन अंकल बैठे हैं तुसी सारे बड़े असी आप देखते आ रहे हैं पिछले वैसे भी 2 साल साढ़े लिए बड़े टफ निकले है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ कार्यक्रम का मतलब तो यही है कि ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਲਚਰ ਜਾਣੀਏ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਾਈਵਰਸ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ why this strength this is exactly this is a perfect example we enjoy each other's food we learn values from each other's that is our diversity. So in Brampton, these 3 days are wonderful, wonderful days. Enjoy as much as you can. There's lots of pavilions around there. I know Lover's Lake, and there's a Century Garden and a soccer center. So enjoy all the pavilion, and I'm glad to be here in Punjabi Pavilion. Thank you so much, Ji. Token of appreciation and to see organization Lalo School can present that.
ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆਰਟ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Although before I begin, I want to offer my condolences to Akie Abe, the wife of former Prime Minister Shinzo Abe, and to the rest of his family and loved ones. Our thoughts are with you and with the people of Japan today. I knew Shinzo for many years. He was a thoughtful, compassionate, strong leader who understood the importance of service, understood the importance of building a better world, better opportunities for his citizens, but stepping up and getting involved in issues around the world that really, really mattered. He was a great friend and a partner to Canada. He was a man of immense talent, and not just his family, not just the entire country of Japan, but the entire world feels his loss. Compounded by the fact that to see a senseless act of violence when he was busy doing what he loved, in serving his community, serving his country, stepping up in a political campaign, is horrifically disturbing. It is important that all of us recommit ourselves to the values and principles of democracy, which hold that yes, there will be incredible diversity of perspectives, of opinions, of views on how we need to go forward. But in a democracy, that is settled not just at the ballot box, but in between times of ballots, through conversation, through dialogue, through speaking our truths, sharing our concerns, but also through listening to each other. And we must all join together in condemning and pushing back against any threats of violence, any threats of intimidation and division that undermine the public space that we occupy in a democracy in which we all feel safe to contribute, to share, and to serve. On days like today, we're reminded again that our world needs more positivity and more hope. This art installation is made up of 35 words inspired by Nelson Mandela's legacy. For Masai, these words reflect the meaning of humanity, inspiring words like human rights, generosity, unity. One of the reasons why the concept of this art installation is great is because it reminds us of the importance of words. It's easy, your words for this amazing art installation that fits so well in this beautiful city, but would fit so well in any city across the country, and I certainly hope it continues to travel. But thank you for everything you do. Everything you do to make our community stronger, to inspire people, especially young people like my son Xavier here, but make sure that people know that as we pull together, as we work hard, as we lean on each other, we can build communities that can do anything, including winning an NBA championship. ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਫੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेसिक चीज़ें इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ब्रेड है, एग्स हैं, लाइक शुगर, एवरीथिंग इज द प्राइस जो है वो अप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी
मुश्किल हो रही है। और हाँ, पहले तो काफ़ी अच्छा था कि वॉलमार्ट या हम सर्च कर लेते थे कि इधर उधर से ले लेंगे, लेकिन अब तो हर जगह ही महंगी चीज़ें ना, बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और हम कट डाउन कर रहे हैं अपनी ग्रोसरी कि कम से कम चीज़ें लें, क्योंकि वो इतनी महंगी है। पहले हमारा बजट जो था उसमें बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन अब ये बहुत कॉन्सेंटली काफ़ी एकदम से बढ़ गई, इतनी ज़्यादा ना, जिसको हम एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है। ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੰਦੀ, ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਿਮਾਹੀ 2 ਕੁਆਰਟਰਸ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੀਅਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ 6% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ 8% ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ -2% ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ EMPLOYEES ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਜਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਟਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਰੋਜਰਜ਼ ਆਊਟੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜਰਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So it's technically anyone's guess right now until Rogers tells us exactly what's happening. But traditionally, I think historically, this is not the first time that this has actually happened. And previously, it was a technical glitch. So a software update on some sort of networking device that went horribly wrong and shut down the network. So I'm assuming based on the timing, based on the scope of this, that is probably what happened here. But your guess is as good as mine. It depends on several factors. Now, again, we're going back on what's happened previously, and we don't know the true extent of this, but usually it takes about a few hours. But the first outages were reported around 5 a.m. Eastern Standard Time, and we're past the noon hour now. So again, I'm hoping that by end of day, people start getting connected. But again, we don't know because Rogers hasn't told us an estimated time of service delivery. Our lives have been grossly impacted by this outage. It's not just the fact that you can't make phone calls or work. There's medical devices that might be leveraging connectivity. There's small business owners that need to have their point of sale terminals working. So they do need to be a little bit more transparent, and maybe they're still trying to figure out what happened. That's fine, but at least tell people when they expect services to start to be restored. We need a little bit more information instead of
we're working on it. There are definitely risks when it comes to connecting to public Wi-Fi, especially if you're doing it for leveraging a VPN. Make sure you're connecting to an authentic hotspot, and just be cognizant of your surroundings. If you're having those types of phone calls, you don't know who's actually listening in. So just use those simple tips. We're all in this together, and we will get through this. But it's unfortunate given kind of the true scale of this. I don't believe so. Again, just going on historic information, I think that this is a software glitch. Data has been impacted, but at this moment, I don't believe so. बीते वीकेंड आगा खान म्यूजियम च अंडर द टेंट नाम का एक प्रोजेक्ट दिखाया गया सी। दस दे कि अंडर द टेंट एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है जिस विच कनेडा भर दे 18 ग्रेजुएट्स देशां दे बहुत सभ्याचारक दीयां कहानियां दस रहे ने। जिस दौरान एक दस्तावेजी फिल्म काली भी दिखाई गई। उस फिल्म के पोस्टर विच मां काली नूं सिगरेट पींदे दिखाया गया है, जिस नाल हिंदू भाईचारे दीयां धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है ते जिस तो बाद आगा खान म्यूजियम ने कहा है कि वह हिंदू भाईचारे दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण लई डूंगा अफसोस प्रगट करदा है। काली माता दा कोई इहो जिहा पोस्टर मतलब तुसी कदी किसी मंदिर विच किसी कदी भी तुसी किसी होर मूवी च कदी इस तरह दी कोई पोर्ट्रेयल तुसी नहीं देखी होगी। ते वाई सिंगल आउट ओनली on one particular community? इस तरीके दी तुसी कोई डॉक्यूमेंटरी या कोई मूवी किसी होर रिलीजन या कम्युनिटी दे बारे तुसी बना सकते हो? आई डोंट थिंक यू बना सकते हो। असी सारे जेड़े भी एस्पेक्ट्स हैगे ने एक पर्टिकुलर कैनेडियन सोसाइटी दे उत्थे कैनेडियन हिंदूज दा कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा वड्डा हैगा। से उस नजरिए नूं रखते हुए इस तरीके दी डॉक्यूमेंटरी जब लाइक आई सेड कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज तो आंदियां ने, दैट इज व्हेन दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिंदूफोबिया। that is a cause of concern for us. कोविड महामारी तो बाद बिना किसी पाबंदी दे पहली बार कैलगरी स्टैंपीड शुरू हुई है। सैलानियों के वापस आने दे नाल शहर नूं उम्मीद है। जेफ हैसल ने कहा कि साडे सैर सपाटा उद्योग नूं महामारी नाल बुरी तरह प्रभावित किया गया है। ये काम ते वापस जाने का एक बहुत वधिया मौका है। The idea that COVID has reminded us sometimes that things can be taken from us in the wink of an eye, and to understand we can come back out and celebrate this parade, this yearly thing that's been happening for almost 100 years, or over 100 years. In some ways, the city really wants this, and this is really important for the city. Our tourism industry has been hit hard by the pandemic. This is a really great opportunity to get back to work. Catering companies, they're tough on staff. Lighting companies, sound companies, they're tight on staff. So we've actually had to turn down 3 events, move them to later in the year because we just couldn't find the team. It just looks amazing so far, just being with everyone She wants the around, cockroach all the pizza. crazy food. I'm really looking forward to the grandstand show. I think that's sounding really good. 2 हफ्ते पहला सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संबंध च संवैधानिक अधिकार नूं खत्म कर दिता सी ते उस तो बाद राष्ट्रपति जो बाइडन नूं अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोगियों के दबाव का सामना करना पै रहा है, जिस तो बाद यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक कार्यकारी आदेश से दस्तखत किए ताकि देश भर में गर्भपात तक औरतों की पहुंच नूं सुरक्षित करने च मदद की जा सके। Before I speak to the Supreme Court extreme decision overturning Roe, I want to comment on one piece of good news, economic good news today. Today, the Labor Department reported that we added 372,000 jobs last month. 372,000. Here's why it's important. Our private sector has now recovered all of the jobs lost during the pandemic and added jobs on top of that. We have more Americans working today in the private sector than any day under my predecessor, more today than any time in American history. Today. In the second quarter of this year, we created more jobs than any quarter under any of my predecessors in nearly 40 years before the pandemic. Think about that. At a time when our critics said the economy was too weak or having already added more jobs, we had already added more jobs my first year as president of any president in history,
We still added more jobs in the past 3 months than any administration in nearly 40 years. Now look, I know times are tough. Prices are too high. Families are facing the cost of the living crunch. But today's economic news confirms the fact that my economic plan is moving this country in a better direction. The unemployment rate is near a historic low of 3.6%. Private sector jobs are at a record high. Gas prices, still way too high, have fallen now 25 days in a row. And this week we saw the second largest single day decrease in gas prices in a decade. We still have a lot of work to do. I'm not suggesting there's a lot more work to do, but I am suggesting we're making significant progress. The program is working. Now, with the Vice President, Secretary Becerra, and Deputy Attorney General Monaco, I want to talk about an executive order I'm signing to protect reproductive rights of women. In the aftermath of the Supreme Court's terrible, extreme, and I think so totally wrong-headed decision to overturn Roe v. Wade. In both formalized actions I announced right after the decision, as well as adding new measures today. Let's be clear about something from the very start. This was not a decision driven by the Constitution. Let me say it again. This was not a decision driven by the Constitution. And despite what those justices in the majority said, this was not a decision driven by history. You've all probably had a chance to read the decisions and the dissent. The majority rattles off laws from the 19th century to support the idea that Roe was a historic anomaly because states outlawed abortion in the 1880s toward the end. But that's just wrong. The truth is, today's Supreme Court majority that is playing fast and loose with the facts. Even 150 years ago, the common law and many state laws did not criminalize abortion early in pregnancy, which is very similar to the viability line drawn by Roe. ਰੋਜਰਸ ਆਊਟੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Hear the frustration of millions of Canadians. This outage has affected consumers, has affected citizens, people who want to do banking. And obviously, first I share the frustration. The second thing, obviously being clear that this is unacceptable. And the third thing is to be in solution mode. Not only I spoke to him, but I spoke to the CEO of TELUS, the CEO of Bell, to make sure that we have the best experts in the world willing to help to get to the bottom of this. I know from the company they're still investigating the cause of this outage in their system, and certainly everyone is working now on getting that back live as quickly as possible and making sure that when they go back live that there's additional capacity in other networks so it doesn't have a rippling effect on other networks in Canada. Well, we can't exclude it at this point. The best experts in the world are looking at that. It's not likely. And like I said, they've been reaching out to experts around the world. Everyone is looking into that to make sure that we can restore services. Millions of Canadians have been impacted, and that's priority number one as we speak, is to get back online, make sure that we have additional capacity in terms of data in the other networks, making sure that all experts that we can find around the world can look into that and get back a service that Canadians deserve as quickly as possible. And it just shows to all of us and Canadians that we need quality, that we need diversity and reliability in our network. This is impacting everyday lives of Canadians, and I can assure you that everyone is working on that to make sure we get back online quickly. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਚ ਦੇ ਡਫ ਕੋਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ, ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਲਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਮਿਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।